Hello students, I hope you all are fit and fine. Today we'll be studying pair of linear equations in two variables, right? Pair of linear equations in two variables. So in class ninth, we have studied a linear equation in two variable. In standard or general form, we can say that any equation of the form ax plus by plus c is termed as linear equation, right? Where c is constant term. This is constant term. B is coefficient of B is coefficient of y and A is coefficient of x, right? अच्छा एक और बात याद रखनी है. You have to remember graph of linear equation. Graph of linear equation is always a straight line. ठीक है जी? It is always a straight line. कभी भी हम किसी भी लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है? सो अभी चैप्टर है हमारा पेयर. तो इन जनरल हम पेयर लेते हैं. Let's say a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So this is a general pair of linear equation. ठीक है जी, ये बात याद रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म. उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. It means the value of x and y means the value of x and y which satisfies which satisfies a given linear equation, given pair of linear equation. ठीक है जी, x और y की ऐसी वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे is termed as solution of that linear equation, right? Now we are more interested in finding methods of finding solution. Methods of finding solution of linear equation, right? So हमारे पास दो मेथड है. एक है ग्राफिकल मेथड. वन इज ग्राफिकल मेथड, ये हम बाद में पढ़ेंगे. एंड वन इज अलजेब्रिक मेथड, right? In this we have two methods in according to our syllabus. One is substitution method. Substitution method. And second one is elimination method. Second one is elimination method. तो करंटली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. देखो, we have pair of linear equation. Let's say 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. Let this be equation number 1 and this be equation number 2. Always remember substitution method क्या कहता है कि from any one of the equation we have to find the value of variable and substitute it into the second one, right? तो अभी हमने क्या करना है, हमने कोई भी इक्वेशन को यूज करना है. लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन 1, लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पे सेकंड इसलिए चूज कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ये 1 है, राइट? अभी x का कोफिशिएंट नहीं है तो इजीली मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं. x इक्वल्स 3 minus 2y. ओके, let this be 3, right? Let this be 3. So we have
फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो अगर हमने 2 यूज किया है तो वेयर वी विल पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes 7 टाइम्स x की जगह आ जाएगा 3 minus 2y minus 15y equals to 2. If you solve this, it will be 21 minus 14y minus 15y equals to 2. And if you solve this further, what you will get? You will be getting 21 minus 29y equals 2. So this is minus 29y equals to 2 minus 21, which is equal to minus 19, and therefore y will be equal to plus 19 by 29। देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब ये y की वैल्यू हमें कहां पुट करनी है? 3 में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 minus 2 into y, that is 19 by 29। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 29। 29 into 3, 9 is 27, 2 87 minus 19 to the 38. So therefore x will be equal to 49 by 29, right? So these are the two solutions x and y के। ठीक है जी, x और y की वैल्यूज हैं जो कि इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये हमारे मेथड को क्या बोलेंगे? दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ आ गई? चलो जी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इट सेज सॉल्व फॉर x and y, सॉल्व फॉर x and y। तो बेसिक है हमारे पास 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल्स 13/6, राइट? सो हम एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। एलसीएम आ जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3, 3 3 आर 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2। यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, राइट? यहां से, और यहां से इक्वेशन बनेगी, एलसीएम 6 आ गया, दिस विल बी 2x प्लस 3y इक्वल्स 13/6, 6 गेट्स कैंसल्ड, so यहां से 2x प्लस 3y equals to 13। These are the two equations. Let them be 3 and 4. Now solving these equation from equation 3, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से 9x will be equal to माइनस 10y उधर जाके प्लस हो जाएगा -12, एंड x will be equal to 10y minus 12 अपॉन 9। अब हमने ये वैल्यू 3 से निकाली है, तो हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन 4। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 becomes 2 times 10y minus 12 upon 9 plus 3y equals to 13। and if you solve this further, तो ये बनेगा एलसीएम लेके 9, 2 into 10y minus 12 plus 9 3 are 27y equals 13। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 20y minus 24 plus 27y, this is 117। so 47y equals to 117 plus 24, this is equal to 141, right? So y would be equal to 141 over 47, this will give you y as 3। ठीक है जी? so therefore x would be equal to 10y minus 12/9
अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 30 माइनस 12/9 which is equal to 18/9 which is equal to, right? So therefore x2 y3 is the correct, is the required solution लिख सकते हो, ठीक है, is the required. Now let's take another example. Solve for x and y. We are given two equations. One is 0.2x plus 0.3y equals 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals 2.3. Let these equation be, let this be 1 and let this be 2. So यहाँ पे देखो हर एक के साथ डेसिमल प्लेस है और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है. सो वी कैन डू इज कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. मल्टीप्लाई both sides of equation 1 and 2 by 10. So these equations will transform to 2x plus 3y equals 13 and 4x plus 5y equals 23, right? So let this be 3 equation and let this be 4. So हमने use करना है from equation number 3. We can find the value of any variable. आप कोई भी variable की value निकाल लो. 2x will be equal to 13 minus 3y. X will be equal to 13 minus 3y by 2. Right? अब हमने 3 से use करा है. So we will put x in 4. इसको 4 में put कर दिया. Right? इसको हम 5 मान लेते हैं. So therefore 4 times x की value है 13 minus 3y by 2 plus 5y equals 23. देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 ज़ास 4. सो ये आ जाएगा 2 times 13 minus 3y plus 5y equals 23. So you can easily solve it. You will get 26 minus 6y plus 5y equals 23 minus y equals to 23 minus 26. देखो माइनस 6 प्लस 5y जो है वो माइनस y हो जाएगा और 26 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो माइनस y इक्वल्स -3 और यू कैन से y इक्वल्स टू 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x y, राइट. अब ये जो y है ये हमने पुट करना है 5 में. पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5. तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. x विल बी इक्वल टू 13 minus 3 times 5 3 times 3 upon 2. So 13 minus 9 upon 2, that is equal to 4 by 2, and 4 upon 2 is equal to 2. Therefore x2 and y3 is the required solution, is the required solution. चलो जी, next question. Moving on to next question. Just give it a try. Solve for x and y. Given equation as 3x minus 5y equals to 4 and 2y plus 7 equals to 9x. ओके, सो ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसके जब ये क्लियर हो जाएगा देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. सो just label them. Let this be 1 and let this be 2. So from equation 1, what we can write from equation 1,
3x equals 4 plus 5y, okay, and x will be equal to 4 plus 5y by 3, right? Let this be equation number 3. हमने इक्वेशन 1 यूज की है, तो हम ये x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? 2 में. So therefore you can write put equation 3 into in equation 2. So what you will get? You will get 2y plus 7 equals 9 times x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 plus 5y upon 3. This 3 gets cancelled. 3 3s are 9. So it would be 2y plus 7 equals 3 times 4 plus 5y. यहाँ से बनेगा हमारे पास 2y plus 7 equals 12 plus 15y. लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 2y minus 15y equals 12 minus 7 minus 13y equals to 5, or we can say y equals to minus 5 by 13. ये हमारी y की वैल्यू आ गई. Now put y equals minus 5 by 13 in equation 3. So therefore हमारी x की कितनी वैल्यू आ गई? 4 plus 5 times minus 5 by 13 whole upon 3. न्यूमरेटर में 13 एलसीएम आ जाएगा. 13 4s are 52 minus 5 5s are 25 and whole upon 5. Sorry, whole upon 3. So this gets multiplied. X would be 52 minus 25. This is 27 upon 13 into 3. 3 1s are 3, 3 9s are 27. So therefore, x equals to 9 upon 13 and y equals to minus 5 by 13. This is the required solution, right? I hope आपको substitution method समझ आ रहा है, right? So let's take another example. It is given that if 2x plus y equals to 13 and 4x minus y equals to 17, find the value of x minus y, right? So we have to find the value of x minus y. So आपने क्या करना है? Simply इनको 1 और 2 मान लेना है. Just label this equation as 1 and this as 2. So हमने क्या करा? First equation से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली. From equation 1, y will be equal to 13 minus 2x, right? Label it as 3. हमने first निकाली है, तो we will substitute in 2. So put equation 3 in equation 2. What you'll get? 4x minus y. y की जगह हम लिखेंगे 13 minus 2x equals to 17. Solve करेंगे. 4x minus 13 plus 2x equals to 17. 4 plus 2 is 6x. And 17 plus 13, it would be equal to कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 30. So x would be equal to 30 over 6, which is equal to 5, right? So now put x equals to 5 in equation 3. So therefore y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 minus 2 into 5. So 13 minus 2 5s are 10. So y would be equal to 3. So हमारा आंसर क्या है? x 5 y 3. Therefore हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था x minus y. तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3. This is equal to 2. This is the required answer, right? I hope आपको समझ आया हो. With this our substitution, देखो मेथड बेस्ड क्वेश्चन थे, इनको मैंने समझाया.
And in the next class, I'll be taking up the questions which are based on elimination method. And after that, we'll be doing the word problems, right? Thank you. Keep learning, keep sharing.